Students, our today's topic is fertilization and implantation, and you know the definition of fertilization, that it is a process of fusion of sperm with an ovum, and we also call it syngamy. Another word, syngamy, you can use this word also in place of fertilization. And where fertilization occurs, in 10th standard you have studied that fertilization occurs into the fallopian tube. So this is the thing which you have studied in the lower classes, but now you are in the higher classes, so you have to be little specific about the place where fertilization occur. So you know that the ampullary junction is the place where fertilization occur. You remember the female reproductive tract, that there is a ampullary region, there is the isthmus region, and there is a fimbri is also there. So all these are part of the fallopian tube, or you can say oviduct. And also you remember the structure of sperm also. Sperm is looking something like that. This is the structure of sperm. So it has a tail, है ना? This is the acrosome, and this is the body portion, that means the nucleus is also there, and this is the tail region. And due to this tail, sperms are very motile and they swim very rapidly, and they reach to the through the cervix and reach to the uterus, and finally to the ampullary region. That means finally these sperms have to reach up to the ampullary region. And you also know that ovum is also released from the ovary, and it is also transported to the ampullary region, and the fertilization takes place at that place. But there is a question is also given in your NCERT book, that what is the reason that why not all the copulation leads to fertilization and pregnancy. So very simple reason is that you can give that ovum and sperms are, if transported simultaneously, only then can be fertilization be possible na, otherwise there will be no fertilization. And this is the reason why not all copulation leads to the fertilization. ठीक है ना? अगर ovum is mature first and sperm is not mature, or suppose sperm is there and ovum is not mature and reach their ampullary junction, तो फर्टिलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल देयर. तो सेम टाइम में दोनों को वहाँ पर एम्पोलरी जंक्शन पे पहुँचना ज़रूरी है. तो दैट इज़ द रीज़न. एंड अनदर थिंग इज़ दैट हाउ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस takes place. So there is a structure of ovum. If I draw, I think you have learned it by now. So there are two or membrane, and this is the third one. This is like a radiating membrane, and this is called corona radiata. This membrane is known as corona radiata. This is zona pellucida, and internal one is known as vitelline membrane. So these are the three membrane present into the human ovum. And whenever any sperm takes an entry, suppose during the fertilization, what happens? Suppose I am going to make the sperm of the red color so that you can see it properly. So suppose this is the sperm. So this sperm makes entry into it, and this is the acrosome. So sperm always take entry through the acrosome region, and acrosome is very important because acrosome releases certain certain enzymes that are called sperm lysine. You call them sperm lysine, Lysin, sperm lysine. Sperm lysine are certain chemicals or certain enzymes, you can say, which are secreted only by this region, that ये जो neck जैसा region आगे होता है और sperms के अंदर, तो ये वाला head वाला region होता है, it secretes certain chemicals, and these help in dissolving these membranes. ये जो आप membrane यहाँ पर मैंने बनाई 3 membranes, so it help in dissolving the zona pellucida region. That means sperm comes in the contact with zona pellucida first. It secretes certain enzymes, that is sperm lysine. This sperm lysine dissolves the membrane of the ovum, and it makes the entry. That means sperm makes the entry into the ovum, and after then there are certain changes takes place into this layer, that means zona pellucida, or you can say it become thickened, or you can say it become more आप क्या कहोगे, थोड़ा सा बहुत firm हो जाती है, so that further it can stop further entry of any other sperm. So that means the thickness of this membrane ensures that there will be no entry of additional sperm, so it prevents the polyspermy. Polyspermy, a question is also very important. Polyspermy means entry of more sperms. So it has been asked so many times in the examination that what prevents polyspermy. So you can say that that after the entry of a single
sperm, the zona pellucida membrane become thickened and no other sperm gets entry into it. So this is all about the process of fertilization. By the diagram also I can show you. I have take a picture of this diagram also, this one. By the help of this diagram you can also see, this diagram is given in your NCRT. Here they are showing the sperm getting entry into the ovum. So after the getting entry into the ovum, as I told you, that zona pellucida become thickened, and then what happened next, that zona pellucida and the plasma membrane, that means the uterine membrane we are talking about, this induces the completion of meiotic division, because you have studied in that case that secondary oocyte stage में वो रिलीज होता है ओवम. सो अभी divisions are incomplete, तो now they are going to complete. So that means these induces, that means these two membrane induces the first meiotic division of the secondary oocyte, and the second meiotic division is also unequal, and it also results in the formation of second polar body and a haploid ovum, and the haploid nucleus of the sperm and the ovum now fuse together and they form the zygote. So this is the whole process of fertilization, where ovum easily fertilize with the sperm. And next, what are the other developmental stages? So for that we have to move on the next slides, and these next, this is also a diagram of sperm I have drawn. This is the एक्रोसोम रीजन है ना, जब ड्रॉ कर ही लिया तो आपको बताते चलती हूँ दोबारा से. दिस इज द एक्रोसोम रीजन, एंड दिस एक्रोसोम रीजन सिक्रीट्स द स्पर्म लाइसिन. यहाँ से सिक्रीट होता है स्पर्म लाइसिन्स विच हेल्प्स इन टू डिसोल्यूशन ऑफ द egg envelopes, and these are the various mitochondria. Because of these mitochondria it gets lots of energy, so that this is the tail region by which it can show the lashing movement and move from it can move easily, है ना, इसको जहाँ तक भी पहुँचना है. And now come to the embryonal, or you can say that further developmental phase, not embryonal exactly, the further developmental stages of the zygote, क्योंकि अभी fertilization process we have studied, and after the fertilization process there is the embryonal development. And what happens in the embryonal development, with the help of diagram we can see it. I have to go, sir, this is the diagram, this is one diagram, and this is the diagram where you can see it. This diagram is given in your NCRT, and here they have explained this with the structure of uterus. This is the half part of the uterus they are showing. This is the fallopian tube or oviduct, and this is the ovary. तो ये पूरा structure आपको इससे पता चलेगा कि after fertilization what happens. तो it is a whole complete journey of the fertilized मतलब यू कैन से जाइगोट है ना, जर्नी ऑफ जाइगोट की हाउ इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग. तो फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज बेसिकली नोन एज द क्लीवेज. उसको हम डिवीजन नहीं बोलते, वी कॉल देम क्लीवेज, डिवीजन जो स्टार्ट होता है. So the mitotic division starts as zygote moves through the isthmus of the oviduct and called cleavage. It is यहाँ से start हुआ ना चलना, जब ये यहाँ पे just I am taking the color, यहाँ से जब start हुआ ओवम सॉरी zygote जब यहाँ पे fertilize हो गया, यहाँ पे इस प्लेस पे स्थूमस स्पेम्पुलरी जंक्शन पे, तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा यहाँ पर फर्टिलाइज जाइगोट. एंड ये फर्टिलाइज जाइगोट इन बिटवीन द वे, पूरे रास्ते में इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग. तो इट चेंज होता रहता है, 1 से 2, 2 से 3 में से जैसे होता है ना डिवीजन. तो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एट जाइगोट्स मूव, जाइगोट यहाँ से अभी मूव कर रहा है इन द ओविडक्ट, एंड द प्रोसेस इज नोट एज क्लीवेज. ठीक है, इसको डिवाइड करने को हम क्लीवेज वर्ड बोलते हैं इसके अंदर. एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द यूट्रस, क्योंकि डिवाइड होते होते इसको कहाँ जाना है, इसको यूट्रस में जाना है. फॉर व्हाट पर्पस, फॉर the implantation for purpose, and after then for 9 months it is going to be here only. तो एम्ब्रियो बनेगा ना यहाँ पर. तो फिर अब डिवीजन स्टार्ट हुआ यहाँ से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ. आई एम गोइंग टू चेंज द कलर, एंड दीज आर द वेरियस स्टेजेस विच आर शोन इन साइड. ये यहाँ पर भी बनी हुई है, बट दे आर सो स्मॉल दैट यू कैनॉट सी इट प्रॉपरली, दैट्स वाई दे आर गिवन इन द इनलार्ज वे. तो आप इसको देख सकते हो इजिली. दिस इज द ओवम, दिस इज द फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस, जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, दैट माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट्स स्टार्ट मूविंग, है ना, इन द ओविडक्ट में मूव कर रहा है. तो इट इज कॉल्ड क्लीवेज, दिस डिवीजन इज कॉल्ड क्लीवेज, एंड द क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट इज अकर्स इन fallopian tube as you know, and it is holoblastic and unequal. What is meaning of holoblastic? Holoblastic means complete division, as I shown you here. complete division होता है, and unequal means both the cells are not equal. ये बड़ी है थोड़ी सी, ये थोड़ी सी छोटी है.
though it is not equal, and they start dividing. First they divide into 2, then 4, then 16, then 32. Like this they are going to divide, and 32 stage is known as a moruli stage. So the division, or you can say cleavage, is a very important you can say a very important event in this process. And cleavage occurs, जैसे I told you earlier also, कि in the fallopian tube, and it is during the conduction of zygote towards the uterus. It is holoblastic also. And when zygote divides, it has two unequal cells that are called blastomeres. That means these cells which are given here, these are called blastomeres. ये भी blastomeres हैं, ये भी blastomeres हैं. They all are blastomeres, and they keep on dividing. ऐसा नहीं कि रुक जाती हैं 2 के बाद, they keep on dividing. 2 से 4, 16, 8, 16 है ना, ऐसे करके डिवाइड होते रहते हैं. तो that means subsequent cleavage proceeds one after another in an orderly manner, but are rapid and not accompanied by the growth. So this type of division is known as fractionating division. Fractions आपने पढ़े हैं बेटा मैथ्स में. तो suppose this is the cell, it starts dividing, so it keep on dividing in the smaller and smaller cells, and these cells are not growing anywhere. तो ये कुछ भी ग्रो नहीं कर रहे हैं सेल्स, ये ओनली डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स में. तो ये फ्रैक्शंस, छोटे छोटे फ्रैक्शंस, अभी ये था 2 हो गए, 4 हो गए, ऐसे करके ना इट्स कीप ऑन डिवाइडिंग. तो फ्रैक्शनेटिंग प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन है. एंड नाउ एम्ब्रियो इज now a solid ball of 8 to 16 celled, and these 8 to 16 celled, or you can say this structure is known as morula, because it looks like a mulberry. If you have seen a small fruit, इसमें छोटे छोटे से ऐसे बने हुए होते हैं, that is called mulberry. So this is a solid ball like structure, it is called morula, and it is of 16 to 32 cell stages can be, and it reaches to the uterus in about 72 hours after fertilization. It is approximately, I think, 4th day है ना. So it is, but it is still surrounded by the zona pellucida layer. And जो ये cells मैंने बनाई हैं, छोटी छोटी जो division मैंने करके दिखाए हैं in between, ये बीच में, तो these are of 2 types. If I draw it again clearly, तो you can divide it into, these blastomeres are divided into 2 types. You can say कि 2 तरह से इनको हम divide कर सकते हैं. Suppose this is the ball like structure. These are the micromeres. These are the smaller micromeres. These are the peripheral, and these are the macromeres. These are the macromeres. They are larger in size and they are central. That means macromeres and macromeres, 2 types की cells होती हैं blastomeres में, दिखती ही नहीं है apparently आपको, but they are of 2 types. I can show you in the other diagram. You can see it clearly in that diagram. In this diagram you can see. Yes, it is a perfect diagram for you. This is a 2 cell stage, and what जो cells stage आपको दिख रही हैं, they are formation of blastocyst. जब blastocyst बन रहा होता है उस समय की हैं. तो these are the 2 cell stage. These are not the equal ones, है ना. unequal अभी मैंने आपको बताया था. तो these are the blastomeres. It keep on dividing. You can see, and here you can see that micromeres, smaller one is outside, and megameres, which are bigger one, they are present into the inside. तो now how blastocyst is formed. This is the blastocyst, है ना. ये वाला डायग्राम जो है आपको blastocyst का, ये कैसे बनता है. तो suppose you have seen here, this is the diagram. So it involves the dynamic rearrangement of blastomeres. That means these blastomeres arrange very dynamically, and this outer layer, that means I am talking about this outer layer. ये जो वाली, सॉरी कलर चेंज कर रही हूँ, ये वाली जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर, ये वाली आउटर लेयर, ये आउटर लेयर, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द माइक्रोमेयर्स, है ना. माइक्रोमेयर्स इज आउटर. तो माइक्रोमेयर्स की बात मैं कर रही हूँ आपके साथ. द आउटर लेयर ऑफ सेल बिकम्स फ्लैट. ये थोड़ी सी फ्लैट हो जाती हैं, देखो यहाँ पर दिख रही हैं हल्की सी फ्लैटेंड, ये वाली सेल्स हल्की सी फ्लैटेंड होकर दिख रही ना आपको. तो जैसे अभी पहले तो राउंड राउंड मैंने ऐसे बनाई थी, बट नाउ दे लुक लाइक दिस काइंड ऑफ सेल. तो लिटिल बिट फ्लैट हो गई ना, थोड़ी सी ये फ्लैट हो गई हैं, तो फ्लैट हो जाती हैं. तो दैट मीन्स द ब्लास्टोमियर्स, दैट आउटर लेयर ऑफ सेल्स बिकम फ्लैट, एंड दे आर नोन एज द ट्रोफोब्लास्ट देन. एंड ट्रोफोब्लास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस. ये वाली सेल्स जिनके बारे में बात मैं कर रही हूँ, दीज आर द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स. दे स्टार्ट्स ड्राइविंग न्यूट्रिटिव मटेरियल फ्रॉम द यूट्रस. यूट्रस की एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स होती है ना, वहाँ से कुछ न्यूट्रिटिव मटेरियल ये ड्रॉ करता है, एंड एक कैविटी में भरता, यहाँ पर ये कैविटी है सपोज कर लो, ये पूरी कैविटी में फिल करता चला जाता है ये सारा.
यूट्राइन एंडोमेट्रियम से लेकर के। तो द फ्लूइड एब्जॉर्ब्ड बाय द ट्रोफोब्लास्ट कलेक्ट्स, अब ये ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं ये वाली, ये कलेक्ट कर रही हैं सारा और यहाँ पे बीच में डालते जा रही हैं, सारा फ्लूइड लेती जा रही हैं। तो देयर इज़ अ सेंट्रल कैविटी डेवलप हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट्स। और ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोसील बोल सकते हो, पूरे को तो हम ब्लास्टोसिस्ट बोल देते हैं, अदरवाइज इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्लास्टोसील। सील मीन्स कैविटी। तो दिस इज अ कैविटी एंड दीज आर द सेल्स विच आर मैक्रोमियर सेल्स। तो ये अब ये यहाँ पर कैसे आ गई, बिकॉज यहाँ तो आप कहोगे पूरे में भरी हुई थी, बिकॉज इट कीप ऑन इंक्रीजिंग, इट कीप ऑन ग्रोइंग। कैसे ग्रो करती जाती है, बिकॉज एज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिटिव फ्लूइड इंक्रीजेज इन द ब्लास्टोसील द मोरुला इन लार्जेस। एंड ये अब एक सिस्ट की जैसा आपको दिख रहा है, सिस्ट मीन समथिंग बलून लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद वाटर, तो ये वैसे ही दिख रहा है ना आपको, तो इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द दीज लेयर्स, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ट्रोफोब्लास्ट लेयर का क्या काम होता है, तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो प्रॉपर, क्योंकि अब इनसे देखो एम्ब्रियो बनेगा, ये सब जो डेवलपमेंट्स आप देख रहे हो ये एम्ब्रियो बनेंगे, उसलिए उसके पहले के डेवलपमेंट है। तो दिस ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो यहाँ पर है, ये वाली जो आउटर वाली, इट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, कोई एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। दीज सेल्स ओनली फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर्स और न्यूट्रिटिव लेयर्स और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स, जैसे अभी आप पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो के चारों तरफ लेयर्स होती हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस ना, तो वो लेयर्स बनाने के काम आती हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्रोफोब्लास्ट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, है ना, नथिंग लाइक दैट। एंड इसके बाद में और भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेक्स्ट इज द इनर सेल मास ऑफ मैक्रोमियर्स। दिस इज द इनर सेल मास ऑफ द मैक्रोमियर्स, जो कि एक कोने पर आ गई बिकॉज इट कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब ये बॉल बढ़ती रहेगी, इसमें सब भरता रहेगा पानी ये वाले में, तो क्या होगा, थोड़े दिन के बाद ये ऐसे नॉब की तरह दिखने लगेगी, तो वी कॉल्ड इट एम्ब्रियोनल नॉब। अब क्योंकि नॉब जैसी दिख रही है तो इसको हम नॉब ही बोल देते हैं, तो वी कॉल इट एम्ब्रियोनल नॉब। एंड एम्ब्रियोनल नॉब इज द फर्स्ट, यू कैन से दीज आर द पोर्शन विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनल बॉडी। ये पहली चीज़ है जो एम्ब्रियो की बॉडी डेवलपमेंट में काम आएंगी ये सेल्स। तो दैट्स वाई यू कॉल्ड हिम प्रिकर्सर ऑफ द एम्ब्रियो। प्रिकर्सर मीन्स जिनसे बर्थ लेता है एम्ब्रियो, मतलब जिससे शुरुआत होती है, तो प्रिकर्सर ऑफ द एम्ब्रियो यू कैन कॉल दिट एम्ब्रियोनल नॉब। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट दीज आर द फर्स्ट सेल वेयर आप कह सकते हो कि इनसे एम्ब्रियो ओरिजिनेट होगा। एंड इट हैज़ सर्टेन स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स ऑल्सो दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा, बिकॉज स्टेम सेल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी टाइप ऑफ योर बॉडी सेल्स। कोई भी टाइप की बॉडी सेल्स आपकी वो बनाई जा सकती हैं स्टेम सेल से, बिकॉज जो स्टेम सेल्स होती हैं दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड सेल, ये डिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं होती, तो इनसे आप कुछ भी बना सकते हैं। And one more thing which is not given in your NCERT book, but I am just telling you that ये जो blastocyst है, where the embryonal knob is present, that means this is the embryonal knob, ये embryonal knob है ना, it is called embryonic pole, and opposite ये वाली side कहलाती है a embryonic pole, A B E M B R Y O NIC, M embryonic pole है ना, दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया so that it will be easy टू अंडरस्टैंड कि कौन सी जो है वो ये एरिया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंटल स्टेजेस, है ना, फ्यू डेवलपमेंटल स्टेजेस। अभी थोड़ा सा और भी आपको बताना बाकी है मुझे, बिकॉज आई एम जस्ट आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी इट इज़ अप टू द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन दैट ब्लास्ट। अब नाउ दिस ब्लास्टोसिस व्हाट हैपन टू दिस ब्लास्टोसिस्ट, दिस ब्लास्टोसिस इज गोइंग टू एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, क्योंकि आपने इस वाले डायग्राम में देखा है, if I again if you see in this diagram, this all these stages, after passing all these stages, what is the fate of this blastocyst, that this blastocyst come into the uterus and it get implanted here। अब यहाँ पर ये implant हो जाएगा and it leads to the pregnancy after then, because what is implantation is a process of attachment of blastocyst, or you can say blastula, on the endometrium of the uterus। यूट्रस की वॉल में ये इम्प्लांटेशन हो जाता है, एंड इम्प्लांटेशन में अकर एट एनी पीरियड बिटवीन 6th and 10th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 6th and 10th डे कभी भी, बट जनरली इट अकर्स ऑन द 7th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो रिमेंबर दिस थिंग, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। देयर आर सो मेनी डायग्राम्स गिवन हेयर, you can go through it, because before going in the detail you have to know very well the diagrams of sperm, ova and the female reproductive organ, so that you can easily understand ki what you are going to explain.